Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question is, draw a label diagram of reproductive organs of an earthworm. earthworm hermaphrodite होता है, उसमें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. 10th एंड 11th सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होता है. टेस्टिस कैसे प्रेजेंट होता है? विद इन द सैक्स. नेक्स्ट इज seminal vesicles are also present there in the 11th segment. These are spermatical funnels. Vasa differentia होता है up to 17th segment from the testicular sac. Next, accessory glands are present in the 17th and 18th segment. There are common prostatic and spermatic duct. प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर ऑल्सो देयर. जो ये कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट है, ये ओपन होती है इनटू द 18th सेगमेंट. स्पर्मेथिका आर प्रेजेंट फ्रॉम 6th सेगमेंट टू 9th सेगमेंट. नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड ओवेरियन फनल. कैन सी these yellow pairs are of ovary. Next, this is the ovarian funnel that opens into the 13th segment, and this part is ovarian duct जो कहाँ present है? 14th segment. So this was about the reproductive organ of an earthworm, जिसमें male और female part दोनों होते हैं.